Nice to see you here. Namaste, good morning. How are you? I'm fine, thank you. Good. So we are Namaste Didi. So good. We are here on 20th August at the scheduled time. And let us begin reading the book Vyavahaaraatmak Janvaad, which is behavior-centered conversations. And we have to begin from page 98. So one moment. So last week we started chapter 7. This the name of the chapter is behavior-oriented activities. Vyavahaarvadi Karyakalaap. So we could read one page from there. And then this is where we ended last time. We will just read it briefly again so that the connection is established. जीवन आकांक्षा के अर्थ में ही संभवतः साधना, अभ्यास, योग, ध्यान आदि को परंपरा में पहचानने का प्रयास किया। इन सारे प्रयासों को प्रयास के रूप में ही देखा गया। It was probably for fulfillment of Jivan expectation that endeavors have been made in human tradition towards sadhana, practice, yoga, meditation, or mindfulness, etc. All these endeavors can be categorized only as endeavors. Okay, this is important. Like इन सारे प्रयासों को प्रयास के रूप में ही देखा गया. And they are well-intentioned endeavors. But every endeavor, सब प्रयास के अंत में हमको कुछ result भी expect रहता है. We expect some result from all our efforts or endeavors. Those results so far are not. The result in the form. And what were the results we expected? The result in the form of widespread acceptance is not seen. इसका फलन लोकव्यापीकरण के रूप में देखने को नहीं मिला. जीवन आकांक्षा क्या है? जीवन आकांक्षा सुख, शांति, संतोष, आनंद. ये जो है जीवन आकांक्षा है. मानव आकांक्षा क्या है? समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्थित. So human expectation is resolution, prosperity, fearlessness, and coexistence. And Jivan expectation is happiness, peace, contentment, and bliss. Okay, so human is body and Jivan. So prosperity, all the physical things, they are required for the body. So that is why when we talk about human expectation, we talk about prosperity. When we talk about Jivan expectation, we are talking about only the state of mind. Okay, this is a fine distinction. So with this point where we left off last time, we can begin. We read this paragraph last time. This is what I remember. So maybe what we can do is we will straight away start reading line by line. Vandana Didi, good morning. Nice to see you in the meeting. Yeah, good morning, Bhaiya. Good morning, everyone. Good morning. So what I'll do is I'll shift it to the next page so we can see Hindi, English on the same screen. समझदारी से संपन्न होने के क्रम में ध्यान पूर्वक ही सफल होना पाया जाता है. It is only when one is mindful or pays attention that one becomes accomplished with understanding. समझदारी से संपन्न होने के क्रम में ध्यान पूर्वक ही सफल होना पाया जाता है. If only when we pay attention to it, only when we are mindful, that only then we become accomplished with understanding. ध्यान पूर्वक सफल होने का तात्पर्य हम जो कुछ भी शब्दों को सुनते हैं, सटीक सुनने से स्मरण तंत्र तक पहुंचना पाया जाता है. यह सटीक सुनने का तात्पर्य मन लगाकर सुनने से ही है. What it means is, what this paying attention or being mindful means is, whatever we hear as words, it reaches our memory system provided it is heard attentively. Hearing attentively means mindful listening.
यह सटीक सुनने का तात्पर्य मन लगाकर सुनने से है. Hearing attentively means mindful listening. Just falling of words on our eardrums does not serve the purpose. Okay. We hear words, we try to make sense of them, out of them. This is what we are saying, paying attention to what one hears. This is mindful listening. सटीक सुनने का तात्पर्य मन लगाकर सुनने से है. Hearing attentively means mindful listening. मन को लगाए रखना ही ध्यान का तात्पर्य है. Being mindful is nothing but paying attention. And they are one and the same. मन को लगाना ही ध्यान का तात्पर्य है. Being mindful is nothing but paying attention, or maybe we can keep it single. I mean, they are one and the same thing. I mean, this is what we are trying to say. Being mindful is nothing but paying attention. Certainly reading it, I don't like it too much. मन को लगाए रखना ही ध्यान का तात्पर्य है. Being mindful is what is meant by I think this is better. बताएं, बाकी साथी बताएं, ये ठीक लग रहा है? Being mindful is what is meant by paying attention. Yes, those who know Hindi and English both. शिल्पा दीदी, है भैया, बट उसका बहुत अच्छा लैंग्वेज फॉर्मेशन ज्यादा जम नहीं रही है ये वाली. थोड़ा सोचना. ये being mindful is what is meant by paying attention. Okay. I think paying it. हाँ. अब बताइए कैसे, what can we do to improve it? मन को लगाए रखना ही ध्यान का तात्पर्य है. भैया, being attentive is mindfulness. हाँ, अच्छा लग रहा है. Being attentive is mindfulness. जी. Is mindfulness or is meant by mindfulness? मतलब वो तात्पर्य जैसे आ रहा है ना, मन को लगाए रखना ही ध्यान का तात्पर्य है. तो फिर वो कर सकते हैं, being attentive is the meaning of mindfulness. This is fine. Being attentive is the meaning of mindfulness. मन हर नर नारियों में उद्देश्यों के साथ लगना देखा जाता है. This is interesting. Babaji is, making one small link to another one and to another one, and giving us an important insight here. मन हर नर नारियों में उद्देश्यों के साथ लगना देखा जाता है. All humans, males and females, are mindful only if the topic is aligned with their goals. Okay, so we started with listening or hearing, and then we say, it reaches our memory system, or what is mindful listening is when we pay attention. And now he's saying we pay attention only if the topic is aligned with our goals. Okay, if someone is saying something in which I have no interest, what it simply means is that it is not aligned with my goals. And we hear a lot of things, we pay attention to some of them, and we ignore or dismiss some other discussions, or we are not interested in participating in those other discussions because maybe we have certain goals
and those discussions are not aligned with our goals. So what Babaji is saying is, all humans, males and females, are mindful only if the topic is aligned with their goals. हर मन, हर नर नारियों में उद्देश्यों के साथ लगना देखा जाता है. अब now linking it further, इसका तात्पर्य उद्देश्यों का होना पहले से ही स्वीकृत होना आवश्यक है. Okay, it clearly indicates that goals are already there and accepted before. Right? So I already had some goals, although I may or may not be aware about them. So what I hear at some subconscious level, if it is aligned with the goals I have, I pay attention to what is being said. And if it is not aligned, then I do not pay attention. So goals are already there. Okay, so every human already has some goals which are acceptable to him or her. Based on those goals, they have their interest in various topics and pay attention to those which are relevant to that, which are aligned to that. Okay, so in in 3-4 sentences, Babaji has mentioned an important point. I found it interesting. And now he is elaborating it, giving examples. जैसे मानव का अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, गाड़ी, घोड़ा, पद, पैसा, सम्मान का उद्देश्य बनता है, उसी क्रम में समझदार बनने का उद्देश्य भी स्वाभाविक है. For example, good clothes, good food, car, position, money, and respect are some common goals. Okay, so these are some common goals. In a similar manner, to understand is also a natural goal. उसी क्रम में समझदार बनने का उद्देश्य भी स्वाभाविक है. In a similar manner, to understand is also a natural goal. So, I mean, all of us have interest in good food, good clothes. So whenever the environment is offering discussions or material regarding these things, then we get interested in that. Okay. So similarly, to understand, to become wise is also a natural goal. This is what is being said. हाँ जी शिल्पा दीदी. भैया मुझे सेंटेंस में लगा कि ये छूट गया, लाइक इसमें लिखा ना सम्मान का उद्देश्य बनता है, तो मतलब these goals are aligned, मतलब for gaining respect. तो दीदी इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे. देखिए इसको दोबारा पढ़ लेते हैं. जैसे मानव का अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, गाड़ी, घोड़ा, पद, पैसा, सम्मान. मुझे ऐसा लगा कि ये सब ना एक चीज है, एक कैटेगरी रखी, इनका उद्देश्य बनता है ना. तो इनका उद्देश्य बनता है, तो people pay attention to these things. उसी क्रम में समझदार बनने का उद्देश्य भी स्वाभाविक है ना. Although so far it has not materialized. हम भी अगर अपनी पर्सनल लाइफ में, if we look at our families, in our lives, did we have this as our goal to become wise? Okay, so personally, when I look at myself, I do self-exploration, I realize this was not a goal I had. I mean, actually, I assume that I'm already wise, and most of the time. Okay, so to become wise is a goal. Then wherever wisdom is being talked about, then I pay attention to that. Okay, so if this goal is not there, then discussions are dismissed or ignored, and we have no interest in them. So जो सम्मान का उद्देश्य जो है एग्जाम्पल के रूप में लिखा है कि अच्छे कपड़े का उद्देश्य बनता है, अच्छे खाने का बनता है, गाड़ी का बनता है, घोड़े का बनता है, पद, पैसा, सम्मान, इनका उद्देश्य बनता है. ऐसा दीदी, आई एम इंटरप्रेटिंग इट लाइक दिस. अच्छा, एक्चुअली आई वाज रीडिंग कि ये सब सम्मान का उद्देश्य बनता है. अभी ठीक हो गया? जी. Okay, so we'll read it again in English. For example, good clothes, good food, car, position, money, and respect are some common goals. Okay, so whenever there is something being talked about these things,
whenever some business opportunity is being discussed, whenever some money making opportunity is being discussed, most of the people are very enthusiastic, to participate or to pay attention to what is being discussed. Right? Because money is a goal. So when the topic is aligned with my goal, I pay attention. Similarly, becoming wise or to understand is also a natural goal. This, if we can recognize it very clearly and then incorporate in our living. Okay? This is what Babaji is explaining. जैसे समझदारी के पहले जितने भी मुद्दे बताए हैं उनको मानव अपने उद्देश्य में स्वीकारना अभी तक सर्वेक्षित है ना। तो समझदारी के पहले मतलब इन द प्रीवियस सेंटेंस ये समझदार बनने से पहले जितने उद्देश्य बताए हैं ये सारे उद्देश्य बताए हैं, है ना शिल्पा दीदी। ये इट इज फर्दर क्लेरिफाइंग दिस। जैसे समझदारी के पहले जितने भी मुद्दे बताए हैं सबको मानव अपने उद्देश्य में स्वीकारना अभी तक सर्वेक्षित है। सो it has been seen that so far all the goals mentioned here except understanding are acceptable to humans. All the goals means good clothes, good food, car, position, money, and respect. These are acceptable to all humans, except understanding. समझदारी के पहले या समझदारी के अलावा, this is what is the interpretation of this sentence. It has been seen that so far all the goals mentioned here except understanding are acceptable to humans. यह भी सर्वेक्षित है कि समझदारी की अपेक्षा छोटी आयु से ही प्रभावशील रहती है. It has also been seen that expectation of understanding exists since childhood. कुछ आयु तक पद, पैसा, सम्मान को लक्ष्य बनाकर जैसे भी आदमी जूझता है, अच्छे बुरे तरीके से कुछ पाता है, कुछ खोता भी है. Up to a point, people struggle for the goal of status, money, and respect by hook or crook. Sometimes they get it, and sometimes they lose it, or sometimes they do not get it. कुछ पाता है, कुछ खोता है. Like I don't know. It's a poetic phrase. So खोता है means they actually lose it, or it is like simply they make effort and do not get it. ये थोड़ा सा देख सकते हैं इसको, whether we want to use the word. Sometimes they get it and sometimes they lose it, or sometimes they get it and sometimes they don't get it. What sounds better? I was not sure, so I did a literal translation. कुछ पाता भी है, खोता भी है. But I think when I first read it, at least in English, when you say lose it, it assumes that they already had it. They already had it, exactly. But I think what you're saying is that they get it and sometimes you don't. They don't get it. Yes, yes, I also think so. बाकी साथी भी बताएं. Sometimes they don't get it. A point here. We make effort. So in our normal manner of speaking, we are saying in the previous sentence there was this word prayas. We make efforts. So we are using this word endeavors for prayas. A simple word is effort, but I want to explain here why we are consciously using endeavors for prayas and not effort. In Madhyas Darshan, there is a very key phrase, Shram Gati Parinam. It comes very frequently, and it's very important key phrase, Shram Gati Parinam. So there, for Shram, we are using effort. Okay. So because effort has been linked with Shram, so when we get to prayas, then we do not want to use the
word effort here also, because effort is now shram gati parinam में shram के लिए effort रहती है. So प्रयास के लिए mostly you will find that we are using the word endeavor. बढ़िया बढ़िया. But अश्विनी भाई नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार भैया. पिछले कुछ दिन नहीं ज्वाइन हो पाया, एक दो दफा मैं बाहर था, छोटी गया हुआ था हमारी टीम के साथ में. ओके ओके भैया, स्वागत है. शुक्रिया. शिल्पा नहीं, ये दीदी कुछ कह तो रहे हैं. यानी कि लाइफ लाइन जैसा बन गया, मजा आता है सब भैया आपके साथ. हमारे साथ भी ऐसा ही है यानी भैया. एक अंडरस्टैंडिंग में होती है, हाँ और कुछ अगर वो कर पाते हैं, पूरकता होती है, तो वो तो हमारा सौभाग्य होगा. ठीक है, ठीक है. शिल्पा दीदी कुछ कहना चाह रहे हैं. जी भैया, आई वाज जस्ट सेइंग कि आपने वो गोल्स के साथ वी गेट इट. आई मीन इफ वी कैन यूज द वर्ड अचीव, बिकॉज़ नॉर्मली गोल्स वी अचीव ना, सो हाँ, yes, that's right. अचीव Yes, एंड समटाइम्स up वी to a point, people struggle for the goals of status, money, and respect by hook or crook. Sometimes they achieve it. कहीं. मतलब आई वाज जस्ट वंडरिंग कि गोल Yeah, होता yeah, है तो yeah, normally yeah, achieve yeah. होता है. Yeah, you know what I was thinking is goals are achieved, but then I think it's a very simple explanation. So having smaller words, you know, while we are talking about it, sometimes they get it, sometimes they don't get it. I think meaning is not lost anywhere. I'm more, I don't know. बाकी लोग भी बताएं, अचीव करते हैं इसको या गेट ही रखें. इस संदर्भ में तो गेट ही ठीक लग रहा है. मेरे को भी दीदी, शिल्पा दीदी, थोड़ा अभी ऐसा लग रहा है कि यू नो सेंटेंसेस आर इन एनी केस वेरी लॉन्ग, तो जहां जहां पर ऑप्शन हो छोटे वर्ड से सेंस कन्वे हो रहा है, तो समटाइम्स दे गेट इट एंड समटाइम्स दे डोंट गेट इट. ठीक है, फाइन. है ना, वी आर नॉट लूजिंग एनीथिंग इन दिस, आई थिंक. ठीक है. और बोलने में थोड़ा सा सिंपल हो जाता है. इस क्रम में हम चलते हुए कोई ना कोई ऐसी जगह में पहुंचते हैं जिसके आगे हमको ज्ञान विवेक सूझता नहीं है. इसी का नाम है काला दीवार. On this course, we all reach a dead end, a point where we don't have any knowledge or wisdom to guide us regarding the way forward. Okay? इसी क्रम में हम चलते हुए कोई ना कोई ऐसी जगह में पहुंचते हैं जिसके आगे हमको ज्ञान विवेक सूझता नहीं है. इसी का नाम है काला दीवार. तो काला दीवार बोला डेड एंड को. So on this course, we all reach a dead end. Now, what is a dead end? A point where we don't have any knowledge or wisdom to guide us regarding the way forward. Babaji is further elaborating it. जिसे वी ऑल के बदले खाली वी नहीं चलेगा क्या भैया? खाली वी भी कर सकते हैं. Yes. We reach a dead end. I'm good with that. ठीक है, इसी को फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं. जिसे हम लक्ष्य पर बनाए थे, उसे लक्ष्य पर बनाए थे. Let me verify the print version. जिसे हम लक्ष्य पर बनाए थे, that is written like this. Actually, जिसे हम लक्ष्य बनाए थे, ऐसा इसका सेंस है. जिसे हम लक्ष्य बनाए थे, उसे पाने के बावजूद समस्या शेष रह गई. इसका मतलब है हमारा लक्ष्य सही नहीं. If we are not satisfied after achieving whatever we assumed to be our goals, it clearly means that our goal itself was not correct. Okay, so we assume that our goals are good clothes, good food, car, position, money, and the so-called respect. Most of us made efforts for that. Most of us achieved that to some degree or the other by hook or crook. But having achieved that also, we still did not feel satisfied. This is what Babaji is saying. If we are not satisfied after achieving whatever we assumed to be our goals, it clearly means that our goal itself was not correct.
इस क्रम में हम चलते, इसी का नाम है काला दीवार। जिसे हम लक्ष्य बनाए थे उसे पाने के बावजूद समस्या शेष रह गई। इसका मतलब है हमारा लक्ष्य सही नहीं था, अतः लक्ष्य पर पुनर्विचार की आवश्यकता बनती है। सो द गोल नीड्स टू बी रिव्यूड। इसके अभाव में मानव संकटग्रस्त होता ही है। प्रॉब्लम्स परसिस्ट इफ इट इज नॉट डन। अगर हम ऐसा नहीं करते तो संकटग्रस्त ही रहेंगे। प्रॉब्लम्स परसिस्ट इफ इट इज नॉट डन। अतः इसके अभाव में मानव संकटग्रस्त होता है। संकट से छूटना हर व्यक्ति चाहता है। ऑल ह्यूमंस वांट टू गेट रिड ऑफ प्रॉब्लम्स। इसलिए हम ज्ञानावस्था के मानव ऐसे लक्ष्य को पहचान लें जिससे सदा के लिए सर्वतोमुखी समाधान अर्जित होता रहे। Therefore, it is important that we humans belonging to the knowledge order recognize the goal which ensures all-round resolution forever. I found this, the name of the book is Vyavahaaraatmak Janvaad, behavior-centered conversations. And Babaji, as we have discussed repeatedly, the idea is to, get some points, not some, actually many points on which common discussions can be held when we are sitting with friends, when we are sitting with families. All of us need not be talking about deep philosophy. In our day-to-day conversations, these are easy to discuss points. I found this paragraph to be very interesting in that respect. Okay, so, आप में से भी किसी को whatever you also feel लगे, any sharing, any translation related issues, we can talk about that before we move to the next paragraph. Okay. So, I just want to say it's a very nice paragraph, and I think it really shows the importance of your goal, and then that will even determine how you listen, and also it gives a clue about how to study and how to read. Like we can really read and get it if our goal is aligned with it. Otherwise, it might be for a different purpose. So yeah, it's nice. Yeah, good. Thanks. So we can now move to the next paragraph. So if one of you, आप ही में से कोई हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ दे, and then we can do it line by line also. कौन करेंगे? ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ भैया। जी दीदी। सर्वतोमुखी समाधान का धारक वाहक केवल मानव ही है और कोई वस्तु इस धरती पर विद्यमान नहीं है। ज्ञान तंत्रणा का भनक सुदूर विगत से मानव जाति को है। ज्ञान संपन्न होने की इच्छा भी है। ऐसी ज्ञान संपन्नता के लिए भांति भांति की कल्पना व्यक्तिवाद, समुदायवाद के रूप में भी प्रस्तुत होती आई है। कल्पनाओं को मानव परीक्षण करने लगा, किंतु कोई भी कल्पना, परिकल्पना, प्रस्ताव ज्ञान लोक व्यापीकरण होने की जगह में नहीं आया। इसके विपरीत कई समुदायों का ऐसा मानना है, ज्ञान वर्णनीय नहीं है, शब्दों से बताया नहीं जा सकता, शब्द ज्ञान को बोध कराने में समर्थ नहीं है। ये सब बातें बताते रहे। समुदायों के बुजुर्ग ने जब यह देखा इसका लोक व्यापीकरण नहीं हो रहा है, तब दूसरा रास्ता निकाला कि स्वर्ग में सुख मिलेगा और पुण्य कार्यों को निरूपित करना शुरू किया। इसके लिए यज्ञ, दान, तप, परोपकार बताया। Humans are the only entity which is the beholder of all-round resolution. There is no other such entity on this planet.
Since ancient times, humankind has had the inkling that there is something like a system of knowledge. It is accompanied by a desire to be accomplished with knowledge. In its furtherance, various ideas have been floated at individual and sectarian levels for knowledge accomplishment. Humans examined these ideas, but no idea, imagination, or proposal came anywhere near universal acceptance. On the contrary, there is a belief in many sects that knowledge is ineffable, that it can't be described in words, and that words are inadequate when it comes to knowledge. All this has been said. When elders or scholars of various sects saw that it is not working this way, they tried another option, that happiness is in heaven, and for this they started portraying the virtuous deeds, prayers, charity, abstinence, and beneficence were recommended for this. Thank you, Shilpa Devi. So we can see now line by line translation. सर्वतोमुख समाधान का धारक वाहक केवल मानव ही है, और कोई वस्तु इस धरती पर विद्यमान नहीं। और कोई वस्तु मतलब और कोई इकाई। So humans are the only entity which is the bearer holder of all-round resolution. There is no other such entity on this planet. I mean, there is no other such entity means there is no entity which has this capability. Hanji Shilpa Devi. हाँ भैया, since it's entity, I thought it's human is the only entity, ना? हाँ, ये ह्यूमन और ह्यूमंस के बारे में अपनी चर्चा हुई है, बट आई थिंक ह्यूमन ही बराबर है यहाँ पे भैया, क्योंकि entity की बात हो रही है, so that's why. ह्यूमन इक्वल है, ह्यूमंस के बदले ह्यूमन करना ही ठीक रहेगा भैया, ऐसा मुझे लग रहा है। ये पता नहीं क्यों I have a little hesitation. I sometimes feel that human in singular does not read very well. Okay, so humans are the only entity. Humanity use कर सकते हैं. Sorry, I'm Anand Damani. Yeah, human being is the only entity. फिर वो हो जाए. Human being is the only entity. Human being is the only entity That which seeks is the resolution. There is no other such entity. Human being. See, now even this guy is saying, the computer is saying that human beings are the only entity. वही है ना भैया, जब मानव की बात करें तो एक मानव की तो बात नहीं कर रहे हैं ना, सभी मानव की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमंस, मुझे आपने जो लिखा था ना ठीक लगता है, मुझे भी खाली ह्यूमन सिंगल है होता भले ही प्लूरल के फॉर्म में यूज है, बट पढ़ने में जब ह्यूमंस पढ़ते हैं तो सभी मानव उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। रीडेबिलिटी मुझे भी वही लगती है। ठीक है, तो अभी लेके चलते हैं, देखिए सेंस कन्वे हो जाए इसमें। सो ठीक है भैया, है ना, तो ह्यूमंस आर द ओनली एंटिटी विच इज द बियरर होल्डर। अभी ना ये धारक वाहक को बियरर होल्डर जो है ऐसा लेकर के चल रहे हैं। एंड देन व्हाट आई वाज थिंकिंग वाज कि यू नो लाइक इंग्लिश में वर्ड बिहोल्डर आता है, इज इट यू नो लाइक आई एम जस्ट टॉइंग विद इट के क्या बियरर होल्डर को हटा करके बिहोल्डर ले सकते हैं, या अभी बियरर होल्डर लेके चलते हैं, साथ में ब्रैकेट में बिहोल्डर भी रख लेते हैं, है ना। बिहोल्डर को भी हम एक्सपेंड करें तो वी कैन रिलेट इट विद बियरर एंड होल्डर, है ना। धारक वाहक मतलब, धारक मतलब मेरे जीने में आ गया, वाहक मतलब सुना था पिछली पीढ़ी से और अगली पीढ़ी को हमने पास ऑन कर दिया। ओके, दैट इज वाहक। वाहक इज लाइक ए कैरियर, ट्रांसपोर्टर। धारक इज हु हैज इम्बाइब्ड इन देयर ओन लिविंग, है ना। So, you know, like if we look at it, the way I have interpreted it, धारक वाहक बाबा जी ने काफी बार यूज किया है, which is bearer and holder. So we have a lot of good sayings in our tradition, you know, in our scriptures for thousands of years. Now, each generation has heard those things, sort of inherited that from the previous generation. Some of them have
memorized it and then passed on to the next generation. This has been going on from generation to generation, but it is just getting passed on by words or by books. In behavior and in action and in living, those good things are not incorporated. Okay, living is still with gaps. Okay, so good things are being passed on. So that is when it is just being passed on, we are saying उसको कह रहे हैं वाहक, और जब वो गुड थिंग्स जीने में भी आ रही हैं उसको कह रहे हैं धारक. हमने धारण कर लिया. ओके, तो धारक वाहक को इस तरह से कहा. तो सर्वतोमुखी समाधान का, तो हमें धारण भी करना है और उसको पास ऑन भी करना है. उसको उसका धारक वाहक केवल मानव ही है और कोई वस्तु इस धरती पर विद्यमान नहीं. Humans are the only entity which is the bearer holder of all-round resolution. There is no other such entity on this planet. और कोई वस्तु इस धरती पर विद्यमान नहीं. ज्ञान तंत्रणा का भनक सुदूर विगत से मानव जाति को है. तो भनक जो है, भनक एज ए वर्ड है कि कुछ ऐसा वेग सा आइडिया जो है ना, कुछ रहता है. एक क्लियरिटी नहीं है, लेकिन कुछ भास के लेवल के ऊपर कुछ वेग आइडिया के रूप में कुछ रहता है. अब ज्ञान तंत्र मतलब देयर इज सम नॉलेज सिस्टम. तो इसको कह रहे हैं सिंस एंशिएंट टाइम्स humankind has had the inkling that there is something like a system of knowledge. कुछ ज्ञान नाम की चीज होती है, उसकी इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में बात की जा सकती है. इसकी भनक, इसका वेग आइडिया सुदूर विगत से मानव जाति को. ज्ञान संपन्न होने की इच्छा भी है. It is accompanied by a desire to be accomplished with knowledge. तो कुछ ज्ञान नाम की चीज होती है, सिस्टम ऑफ नॉलेज होता है, और मैं भी ज्ञान संपन्न हो जाऊं इसकी इच्छा भी है. Okay, so since ancient times humankind has had the inkling that there is something like a system of knowledge, it is accompanied by a desire to be accomplished with knowledge. मैं ज्ञान संपन्न हो भी जाऊं. ऐसी ज्ञान संपन्नता के लिए भांति भांति की कल्पना व्यक्तिवाद समुदायवाद के रूप में भी प्रस्तुत होते आए. In its furtherance mean to accomplish it, various ideas have been floated at individual and sectarian levels for knowledge accomplishment. संपन्नता के लिए, ऐसी ज्ञान संपन्नता के लिए भांति भांति की कल्पना व्यक्तिवाद समुदायवाद के रूप में प्रस्तुत होती हुई. Okay, so at individual level and at a group level, at a sectarian level, उसको जो है काम किया जा रहा है उसके ऊपर. तो उसको कह रहे हैं in its furtherance various ideas have been floated at individual and sectarian levels for knowledge accomplished. तो various ideas जो है इसको भांति भांति की कल्पना को कह रहे हैं various ideas. कल्पनाओं को, हाँ जी भैया. Can I add a knowledge accomplishment? ये phrase थोड़ा सा ना, it doesn't look like native English. थोड़ा सा जो when we want to reproduce the whole thing, अपने को पूरा समझना है और वापस reproduce करना में we have to go as per an English phrase जैसे होते हैं. Knowledge accomplishment as a phrase, I don't know, somehow it doesn't sound very easy to. Yeah, I understand, आनंद भाई. तो आप सजेस्ट कीजिए क्या कर सकते हैं इसमें, और accomplishment of knowledge कर दें. For attaining wisdom, मतलब knowledge और wisdom दो words है अपने को. तो यहाँ पे we have to be when you gain knowledge you become wise. और थोड़ा सा ना वो एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा वर्ड्स का डिसिप्लिन भी भैया साथ साथ रखेंगे. जैसे ना ज्ञान विवेक विज्ञान, ये तीन शब्द हमारे यहाँ पर आते हैं. तो ज्ञान को नॉलेज लेके चल रहे हैं, विवेक को विजडम लेके चल रहे हैं, एंड विज्ञान को साइंस लेके चल रहे हैं. राइट. तो अभी विवेक के लिए विजडम रख दिया है ना, ज्ञान के लिए नॉलेज है. तो यहाँ पर ज्ञान लोक व्यापीकरण जो है
की बात हो रही है ना, तो ज्ञान attaining knowledge, accomplishing knowledge, imbibing knowledge. We imbibe knowledge. We knowledge को accomplish तो नहीं करते, knowledge attain करते हैं शायद. I think attaining knowledge would be अटेनमेंट better. कर लेते हैं। I don't know. I'm sorry, मैं एक ही आज ही participate कर रहा हूँ. Let me listen first. मैं 2-3 नहीं, क्लास नहीं, attend हाँ, करता हूँ आपका, फिर I नहीं, will try ठीक to है, add. हाँ, So नहीं, ठीक है, I'm बट यू आर sorry. वेलकम भैया। मतलब आप वैसे तो लंबे समय से लगे ही हुए हैं, तो आपने इट्स योर चॉइस, आप थोड़ा सुन भी लीजिए जहाँ हाँ, पे सुन ठीक लेता लगे, हूँ मैं, और थोड़ा वो हाँ, ज्यादा और सही थोड़ा है. अपना साथ में पार्टिसिपेट भी कीजिए भैया। यू आर वेलकम, प्लीज डू नॉट रिस्ट्रेन योरसेल्फ। नहीं, मैं ठीक है, हाँ, थोड़ा बट ये समझ बेटर लेता हूँ. लग रहा है, अटेनमेंट ऑफ नॉलेज ठीक है। साउंडिंग ओके। हालांकि नाउ दैट वी आर रीडिंग इट, एक्चुअल में इसको अटेनमेंट की बात नहीं कर रहे, इस ज्ञान के लोक व्यापीकरण की बात है ना। तो मतलब ज्ञान नाम की कोई चीज है और वो ज्ञान सब तक पहुंच जाए, इसकी बात हो रही है। सो हाउ कैन वी कैप्चर दैट दिस नॉलेज रीचेस एवरीवन, है ना। ये Attaining and अटेनमेंट ऑफ spreading नॉलेज, the ये थोड़ा knowledge. सा, हाँ, थोड़ा सा पर्सनल जैसा कई बार लग सकता है, अटेनमेंट ऑफ Attaining नॉलेज। and spreading knowledge हो सकता है. Attaining and spreading knowledge. एक वर्ड में अगर नहीं आ रहा है तो we can हाँ, मतलब we वो can. कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे खाली लोक व्यापीकरण की बात हो रही है, ग्रहण करने की बात नहीं है ना। ग्रहण नहीं हो करेंगे रही तो है, वो एग्जैक्टली, अटेनमेंट आएगा। यस, 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 नाउ दैट आई एम रीडिंग इट, आई आल्सो रियलाइज इट, पहले ट्रांसलेशन में मेरा ध्यान नहीं गया था। सो इसको ना, वो एक्चुअल में ये लोक व्यापीकरण जो है ना, ये स्प्रेडिंग भी नहीं है। स्प्रेडिंग जो है ना, एक थोड़ा सा हल्का शब्द पड़ जाता है लोक व्यापीकरण में। स्प्रेडिंग एज वेल एज रिसीविंग, मतलब बताने वाले को बता के खुशी मिल रही है, और जिसको मिल रहा है वो भी खुशी खुशी स्वीकार रहा है ना। ये वाला सेंस लोक व्यापीकरण से आता है। अदरवाइज तो ये इतिहास में हो ही रहा है, ये धर्म फैलाओ, अपने धर्म का विस्तार करो, वो भी अपने तरीके से लोग वो ना सार्वभौमिकता की तरफ नहीं जाता है। तो यहाँ पर लोक व्यापीकरण जो है थोड़ा सा, मतलब मेरे को लग रहा है गहरा शब्द है, इसके लिए कुछ वैसे हम इसको डिसेमिनेशन यूज करते हैं लोक व्यापीकरण के लिए। So dissemination is something we can use here. हाँ, that would be a nice word. बहुत सुंदर है, disseminating knowledge. हाँ, that. हाँ, पहले यही आपने यूज किया है ना, वो पहले अच्छा यूज किया है ना। तो डिसेमिनेशन इज एक्चुअली, यू नो, हम इस चीज को भी साथ साथ, जहां मेरे को अवसर मिलता है हम बात कर ही लेते हैं। डिसेमिनेशन इज डिस प्लस सेम, मतलब अगर हम इफ वी टेक इंग्लिश डिक्शनरी एंड वी गो टू द रूट ऑफ द वर्ड डिसेमिनेशन और डिसेमिनेट, दिस इज मेड ऑफ डिस प्लस सेम। ओके, सो सेम इज फॉर सीड्स। ओके, तो जैसे when we are in an agricultural field, okay, we you know sort of spread seed in the field, okay, and then the crop grows in a few months. So उसको जो है वो, so distribution or dispersion of seeds, so the seed of knowledge is spread, उसको इस तरह से लिंक करते हुए dissemination जो है वो लिया है लोक व्यापीकरण के लिए। तो ये अच्छा हो गया, have been at individual and sectarial level for dissemination of knowledge. इसके विपरीत कई समुदायों का ऐसा मानना है ज्ञान वर्णनीय नहीं है, शब्दों में बताया नहीं जा सकता, शब्द ज्ञान को बोध कराने में समर्थ नहीं है। On the contrary, there is a belief in many sects that knowledge is ineffable, that it can't be described in words, and that words are inadequate when it comes to knowledge. तो ये छोटे छोटे फ्रेजेस में देख लेते हैं। इसके विपरीत, on the contrary means what, कि पहले सेंटेंस से लेके चलें, तो मानव परीक्षण करने गए, कल्पना, कोई भी कल्पना ज्ञान लोक व्यापीकरण की जगह पे नहीं पहुंच पाया। ओके, सो वेरियस आइडियाज been floated and
Okay, I think ये इसमें भी I missed one sentence in while I was reading it. In its furtherance, various ideas have been floated at individual and sectarian levels for dissemination of knowledge. Humans examined these ideas, but no idea, imagination, or proposal came anywhere near universal acceptance. Okay, ये कह रहे हैं कल्पनाओं को मानव परीक्षण करने लगा, लेकिन कोई भी कल्पना, परिकल्पना, प्रस्ताव लोकव्यापीकरण होने की जगह में नहीं आया है. But no idea, imagination, or proposal came anywhere near universal acceptance. So one sentence has been split in two sentences in English. No. I'm sorry. Let us see it like this, if we are not missing anything. Okay, let us see. ज्ञान संपन्न होने की इच्छा भी है. Okay, it is accompanied by a desire to be accomplished with knowledge. तो इतना तो ठीक हो गया. ऐसी ज्ञान संपन्नता के लिए भांति भांति की कल्पना व्यक्तिवाद, समुदायवाद के रूप में भी प्रस्तुत होते आई है. In its furtherance, various ideas have been floated at individual and sectarian levels for dissemination of knowledge. Okay, यहाँ पर अभी dissemination word आया नहीं था इस वाले पार्ट में. मतलब इसमें सिर्फ इतना है कि व्यक्तिवाद, समुदायवाद के रूप में प्रस्तुत होते आए हैं. फिर आगे लिखा, कल्पनाओं को मानव परीक्षण करने लगा, किंतु कोई भी कल्पना, परिकल्पना, प्रस्ताव को लिखा, नो आइडिया, इमेजिनेशन और प्रपोजल. ओके, सो कल्पनाओं को मानव परीक्षण करने लगा, किंतु कोई भी कल्पना, परिकल्पना, प्रस्ताव, ज्ञान लोकव्यापीकरण होने की जगह में नहीं आया. ह्यूमंस एक्सेप्टेड दीज आइडियाज, but no idea, imagination, or proposal came anywhere near universal acceptance. इसके बाद में है इसके विपरीत, on the contrary. I think sense is getting conveyed here, although word by word, मतलब many words are exactly translated. इसको पढ़ के देखिए. It is accompanied by a desire to be accomplished with knowledge. In its furtherance, various ideas have been floated at individual and sectarian levels for dissemination of knowledge. Humans examined these ideas, but no idea, imagination, or proposal came anywhere near universal acceptance. इसकी जगह पे नहीं आया है, इसको बोलो came anywhere near. On the contrary, इसके विपरीत कई समुदायों का ऐसा मानना है ज्ञान वर्णनीय नहीं है. On the contrary, there is a belief in many sects that knowledge is ineffable. Now, this word ineffable is new in my dictionary. It is only during the translation process that I came across this word. It means something which is so pure that it cannot be described in words. So in spirituality, this word is used quite often. This is what I heard now. So जो ज्ञान वर्णनीय नहीं है ना, शब्दों से बताया नहीं जा सकता है. So that knowledge is ineffable, that it can't be described in words. शब्द ज्ञान को बोध कराने में समर्थ नहीं है, and that words are inadequate when it comes to knowledge.
ये सब बातें बताते रहे. All this has been said. Okay, in everywhere it has been said. I mean, I am aware about the Hindu belief system because that is where I was born and brought up. But if you know, some of you are aware about the teachings of other religions also, is a similar thing being said in that also? We would love to hear about that. I don't know what is being said about knowledge in Islam or in Christianity, but at least in Hindu philosophy, it has been said that it is something where words fall short. Okay, words are not enough to describe. When it comes to describing the God, when it comes to describing knowledge, it is said that words are not enough. So all this has been said. समुदायों के बुजुर्ग ने जब यह देखा इसका लोक व्यापीकरण नहीं हो रहा है, तब दूसरा रास्ता निकाला. When elders or scholars, okay, बुजुर्ग के लिए वैसे तो elders आता है, लेकिन what I think is that the sense is elders and scholars, है ना, उन सब ने ही ये फिर और दूसरे alternatives निकाले. So when elders or scholars of various sects saw that it is not working this way, they tried another option. तो दूसरा रास्ता निकाला. दूसरा रास्ता क्या था कि स्वर्ग में सुख मिलेगा, that happiness is in heaven. और पुण्य कार्यों को निरूपित करना शुरू किया. And for this they started portraying the virtuous deeds. Portraying की जगह निरूपित के लिए later on I found another word which fits better, and started depicting the virtuous deeds. इसके लिए यज्ञ, दान, तप, परोपकार बताया. Prayers, charity, abstinence, and beneficence were recommended for this. Okay. So this is it regarding this paragraph. बताइए कैसा लग रहा है? Now that we have done it, we can convert it back. So this is what we have read. Okay, so briefly, again, if we summarize it, okay, there is something like knowledge. This humankind has the inkling for a long time. They want to accomplish with knowledge. Okay, the various ideas have been floated around, but none found universal acceptance. On the contrary, when it came to knowledge, it has been said that words are not enough to describe knowledge. It is ineffable. Words are inadequate. All this has been heard. And when the elders or scholars realize that, you know, the knowledge is not, you know, going the way or spreading or disseminated the way we wanted it, then they found some simpler ways, which is like they started talking about heaven and punya kare. Punya kare is virtuous deeds. Okay, and then for that, yajna, dan, tap, paropkar, prayers, charity, abstinence, and beneficence, they have been recommended. So they basically wanted knowledge and ended up at heaven, virtuous deeds, yajna, dan, tap, paropkar. ये जो है, this is what is the flow of this paragraph. अब ये तप के बारे में और इस तरह इसको further आगे paragraph में, in the next paragraph it is being discussed. So any comments on this paragraph? Any translation related issues or some, you know, interpretation of the sentences? We can talk about it. जरा सा भी किसी को भी लगे, हाँ जी. Oh, you were just saying if in different traditions, like if the knowledge is something that humans are to know. And yeah, I grew up going to church in Christian tradition, and from what I remember as a child, there was no even talk about like the ability to know. It was just always assumed that you can't know, and if there was a question,
the answer was more, oh, only God knows, or God Oh, knows really? how many hairs are on your head, and I had questions when I was young about what is heaven like. And in the end, you ask your elders, you ask your youth leaders, you ask the teachers and the pastors, and the answer is something comes like, it's a really great place, but we don't really know, and it doesn't really say much. So you just have to wait and trust. So yeah, there was definitely I never had the idea about knowing. It was just right away assumed that that's not something to ask about. Yes. All the traditional religions, they are founded on beliefs only. Okay. So knowledge part, they are trying to talk about knowledge, but this is what Babaji has done, a balanced critique. Jitna bhi samiksha ki hai Babaji ne, this is what he has said. They tried to do it, but somehow it could not be achieved. This is what is being said here also. ना ज्ञान तंत्रणा का भनक सुदूर विगत से मानक जाति को है. Since ancient times, humankind has had the inkling that there is something like a system of knowledge. Then humans wanted to be accomplished with that knowledge also, but then somehow it is not getting disseminated. And it is said specifically at least in Hindu philosophy that Gyan varnaniya nahi hai, anirvachaniya hai. And this is what Babaji actually had a basic problem with. Okay, so Babaji has written it in so many words. Okay, if the truth or the knowledge cannot be described in words, then what can be described in words? Can only false be described in words? Why are we using language then? If it is not sufficient or adequate to describe the truth or knowledge. So knowledge must be able to be described. That is the purpose of language actually, to pass on knowledge. Okay, so we had a basic problem with this premise that knowledge cannot be described in words. Good to hear from you, Spencer. Thanks. आगे बढ़े अगले पैराग्राफ पे. तब में जो कौन पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को? प्लीज वन ऑफ यू, इफ आप में से कोई पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा. मैं पढ़ सकती हूँ भैया. हाँ जी, पढ़िए. तब में जो कुछ स्वीकृतियां विभिन्न समुदायों में बनी हैं, वे सब अपने अपने में एक बेहतरीन ढांचा खांचा है जो सामान्य जन के लिए कठिन है. ऐसे स्वरूप को बनाए रखना ही तप का फल माना गया. इसके साथ अपने ढंग से संभाषण की शैली, स्वर के सुख मिलने का उद्देश्य, फल स्वरूप सम्मान पात्र बनने वाले भी बढ़ते रहे, सम्मान करने वाले भी बढ़ते रहे. सिलसिला अभी भी जोर शोर से देखा जा रहा है. कुल मिलाकर आदर्शपूर्ण व्यक्तित्व अपने आप में सामान्य लोगों के लिए कठिन सा लगने लगा. सबके लिए सुलभ न लगना, जिनके सानिध्य में से सेवा से पुण्य मिलने का आश्वासन होना, मनोकामना पूरी करने का आश्वासन होना, इसी चौखट को हम आदर्श कहते हैं. आदर्श का सम्मान सुदूर विगत से होते आया है, आज भी होता है. इसमें विचारणीय मुद्दा है आदर्शों का प्रयोजन फल लोकव्यापीकरण न होना. उपकार कैसे होगा? उपकार विधि का लोकव्यापीकरण मुद्दा होना ही नहीं, इस पर जन चर्चा की आवश्यकता बनी हुई है. Whatever acceptance are there in various sects regarding abstinence, all that is a wonderful framework in itself, but it is too rigorous for common people. To sustain this framework, to keep it going, is assumed to be its success, as well as its distinct styles of oration and summons regarding the rewards in heaven, as a result of which the number of people getting respect kept on increasing, and those giving respect increased as well. It is seen that it continues in full swing until today. All in all, the idea complete
personality, the ideal complete personality appears to be rigorous for common people. That which is not practical for everyone, whose proximity and seva ensures divinity and assurance of wishes getting fulfilled. All this is ideals. Ideals have been getting respect since ancient times, and it continues till today. Purpose and fruit of ideals not reaching the masses, how to be benevolent, and whether dissemination of the right method of benevolence is needed or not. All these are worth pondering and needs to be a part of conversations. Good. Thank you, Vandana Didi. Okay, so in the previous paragraph, it ended with, the knowledge in the normal way, it's not getting disseminated. So then talking about virtuous deeds and heaven and then yagge dan tap paropkar. Okay, now tap ko aage continue kiya hai. I would like to hear from all of you, those who know Hindi as well as English very well. इसके लिए तप के लिए क्या शब्द ठीक रहेगा? अभी मैंने इसको तप को एब्स्टिनेंस लेकर के चल रहे हैं. सो जैसे तप से एक वर्ड और बना है हमारे यहाँ पर तपस्वी. ओके, तपस्वी क्या किया है? तपस्वी ने उसने सब कुछ चीजों से अपने आप को एब्स्टेन किया है. Okay, so in abstinence, at the root of abstinence is abstain. Okay, so abstaining from good food, abstaining from comforts, and at times abstaining from sex. ये सारी चीजें जो है इसको तप के रूप में जो है ना, मतलब वो बताया है. शादी वगैरह भी नहीं करनी है, you remain bachelor and spinsters, ये सारी चीजें इसको तप के रूप में मैंने तप को एब्स्टिनेंस लेकर के चल रहा हूं. ओके, एंड देन द नेक्स्ट पैराग्राफ आल्सो तप को एब्स्टिनेंस को ही लेकर के चल रहे हैं. If any of you have a feeling that no, this interpretation is wrong and maybe there is another interpretation, I am very open about it and we can revise this thing. आप लोग बताइए, ये तप के लिए एब्स्टिनेंस ठीक लग रहा है या कुछ और लेकर के चले? पेनेंस एक वर्ड मेरे को याद आ रहा है भैया. आई डोंट नो इफ इट्स relevant here. पेनेंस जो है ना भैया, जहां तक मेरे को लगता है वो पश्चाताप से रिलेट होता है. आई एम नॉट श्योर बट मेरे को ऐसा लगता है. बाकी साथी भी बताए. पेनेंस जो है ना, कुछ गलती हो गया, बाय मिस्टेक आई डिड समथिंग रॉन्ग एंड देन आई वांट टू रिपेंट इट. उसको पेनेंस शायद वहां पर जाता है, बट आई एम नॉट श्योर. We can actually see. Let me open a dictionary here. Can you see the dictionary? I would just wanted to add in both French and English, like the definition, what you described of abstinence is correct, and it can be used in many different ways, and it's a good word to abstain from something. But in general, when we hear it, it's used in the sexual connotation only. So when I first read it, I thought that's what first comes to mind. Yeah, like own husband, wife, or just not having sex, basically. Yes. But then like when we talk about abstinence, at the root is abstaining. Okay, so abstaining is like in all traditions there is a ritual of not having food on some days also, or having very simple food on some days. Okay, that also is a kind of abstinence. I agree and I understand. It's just here when people use abstinence, yes, it refers to that aspect only. Right. Okay. So I don't have another suggestion. Maybe. Okay, so penance. Can you see the screen, the dictionary screen which I have sharing? Okay, so penance is an act of self-abasement, mortification or devotion performed to show sorrow or repentance for sin. Okay, तो आनंद भाई, ये पेनेंस जो है, मैं इसको ऐसा ही मैं भी मान के चल रहा था
तो तप जो है वो इससे पेनेंस से अलग चीज है शायद। ठीक ठीक बात है यार। अगर रिपेंटेंस से ज्यादा वो सिनोनिम हो रहा है तो देन इट वुड नॉट बी राइट हियर। रिपेंटेंस, पेनेंस और एब्स्टिनेंस तीनों के नुएंसेस को समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक बात, ओके, सही। ठीक है। Yeah. तो अभी तप को इन दिस सेंस, वो तपस्वी भी जो हमारे यहाँ पर है वो भी यही करते हैं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल यू नो लाइक सो दे आर एब्सटेनिंग फ्रॉम ए लॉट ऑफ तप। जैसे ना हमारे यहाँ पर एक हिंदी में ऐसा भी बोले कि जैसे आग पे जलना होता है ना, मतलब ताप से भी तप, तप शब्द जो है ना, तप तप के सोना निखरता है, हम जैसे ये वाली सारी चीजें हिंदी में बात करते हैं। तो आग में जलना, राइट, तो वो अपने आप को डिनाई करना, काफी सारी चीजें है ना, कंफर्ट्स को डिनाई करना, ये इस सेंस में शायद मैंने अपने अंदर अभी तक इसको ऐसा इंटरप्रेट किया है, बट यू नो आई एम न्यू टू ऑल दिस। सो आप लोगों का भी जैसा कुछ आएगा वैसा देखते हैं। इस पैराग्राफ को भी पढ़ते हैं और साथ में कुछ रिवाइज करना होगा तो करेंगे। सो तप में जो कुछ स्वीकृतियां विभिन्न समुदाय में बनी है, वे सब अपने अपने में एक बेहतरीन ढांचा खाचा है। Whatever acceptances are there in various sects regarding abstinence, all that is a wonderful framework in itself. है ना, अपने आप में बेहतरीन ढांचा खाचा है। There's a lot of, I mean, they have been very beautifully designed in various sects and religions. So, जो सामान्य जन के लिए कठिन है, but it is too rigorous for common people. ऐसे स्वरूप को बनाए रखना ही तप का फल माना गया है। To sustain this framework, to keep it going is assumed to be its success. ऐसे स्वरूप को बनाए रखना मतलब ये तप की परंपरा बनी रहे, यही तप की सफलता है। सभी ऐसा कर पाएंगे वो प्रैक्टिकल नहीं है, सामान्य जन के लिए कठिन है, लेकिन कोई कोई करता है और अगली पीढ़ी में किसी किसी को इसके लिए मोटिवेट कर पाता है ना। ऐसे स्वरूप को बनाए रखना, ऐसी परंपरा को बनाए रखना ही तप का फल माना गया है। उसके साथ अपने ढंग की संभाषण की शैली, एज स्वर्ग, इसको पहले पूरा पढ़ लें, स्वर्ग में मिलने, सुख मिलने का उपदेश, फलस्वरूप सम्मान पात्र बनने वाले भी बढ़ते रहे, सम्मान करने वाले भी बढ़ते रहे, सिलसिला अभी भी जोर शोर से देखा जा रहा है। तो ऐसे स्वरूप को बनाए रखना ही तप का फल माना गया है। टू सस्टेन दिस फ्रेमवर्क, टू कीप इट गोइंग एंड टू कीप कर देते हैं, एंड टू कीप इट गोइंग is assumed to be its success, as well as their distinct styles of oration, है ना, अपने ढंग के संभाषण की शैली, as well as their distinct styles of oration, स्वर्ग में सुख मिलने का उपदेश, and sermons regarding the rewards in heaven, फलस्वरूप सम्मान पात्र बनने वाले भी बढ़ते रहे, सम्मान करने वाले भी बढ़ते रहे, as a result of which the number of people getting respect kept on increasing and those giving respect increased as well. So ये एक ट्रेडिशन इसका बना रहा, उसके साथ उसकी एक भाषण की शैली रही, स्वर्ग में सुख मिलने का उपदेश रहा, सम्मान का पात्र बनने वाले भी बढ़ते रहे और सम्मान करने वाले भी बढ़ते रहे, सिलसिला अभी भी जोर शोर से देखा जा रहा है। It is seen that it continues in full swing till today. कुल मिलाकर आदर्श पूर्ण व्यक्तित्व अपने आप में सामान्य लोगों के लिए कठिन सा लगने लगा। All in all, the ideal complete personality appeared to be too rigorous for common people. सबके लिए सुलभ ना लगना, जिनके सानिध्य से, सेवा से पुण्य मिलने का आश्वासन होना, मनोकामना पूरी होने का आश्वासन होना, इसी चौखट को हम आदर्श कहते रहे। It's a long sentence, थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं।
सबके लिए सुलभ ना होना, दैट विच इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एवरीवन, जिनके सानिध्य से, सेवा से पुण्य मिलने का आश्वासन होना, whose proximity and सेवा ensures divinity, मनोकामना पूरी होने का आश्वासन होना, एंड एश्योरेंसेस ऑफ विशेस गेटिंग फुलफिल्ड, इसी चौखट को हम आदर्श कहते हैं। ऑल दिस इज आइडियल्स, ऑल दिस इज कॉल्ड आइडियल्स और आइडियल्स जैसा। तो क्या कह रहे हैं, इसको एक बार समझ ले। तो जो सबके लिए सुलभ ना हो, ठीक है, हम सिर्फ उनके पास चले जाएं और उनकी सेवा कर दें, जिनके सानिध्य से, जैसे हम कहते हैं ना, कुछ महापुरुष टाइप के रहते हैं, कुछ सिद्ध पुरुष हैं, उनके पास में गए, हमने उनके दर्शन ही कर लिए, उनके लाइक जहां पर वो रहते हैं वहां पर ही हुए, तो जिनके सानिध्य से, सेवा से पुण्य मिलने का आश्वासन होना। सो वी गो टू देम, टू देयर आश्रम, okay, we are in their proximity for some time, we do their seva, and then we are assured that we will get good results out of it. ये कह रहे हैं, whose proximity and seva ensures divinity, मनोकामना पूरी होने का आश्वासन होना, और अपने मन में जो अनफुलफिल्ड विशेस हैं वो फुलफिल हो जाएंगी, ऐसा भी एक एश्योरेंस सा होना है ना, एंड एश्योरेंस ऑफ विशेस गेटिंग फुलफिल्ड, इसी चौखट को हम आदर्श कहते हैं। ऑल दिस इज आइडियल्स। ओके, ये आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, ऑल दिस इज आइडियल्स। तो क्या कर सकते हैं आप बताइए, शिल्पा दीदी, आपका कुछ सजेशन? हाँ भैया, मैं कह रही थी ऑल दीज आर द डोरवेज टू अटेन आइडियलिज्म, क्योंकि चौखट भी कह रहे हैं ना, तो डोरवे कह सकते हैं उसको। ये लिटरल सेंस में है, इसी चौखट को हम, क्योंकि ये ना, फिर ये जो भी हम यहाँ पर आदर्श वर्ड यूज करेंगे ना दीदी, वो अगले सेंटेंस में भी फिर उसी को लेके चलना होगा। तो आदर्श का सम्मान दूर विगित से होते आया है ना। तो अभी इसको आइडियल बोला, तो फिर हमने अगले सेंटेंस में लिख दिया आइडियल्स हैव बीन गेटिंग रिस्पेक्ट, है ना। तो ये आइडियल्स जो है ये इंडिविजुअल्स के लेवल के ऊपर, जस्ट 1 सेकंड, sorry, so ideals मतलब ideals are personalities, it is not a thought, I think। ये थोड़ा सा जो है ना, ये मेरे को यहाँ पर ऐसा लग रहा है, आप बताइए। जी भैया, इसको थोड़ा हाँ वही देखना पड़ेगा। जब हम आइडियलिज्म बोलते हैं तो वो एक विचारधारा के रूप में जो है वो आ जाता है ना। ये आइडियल्स जो है ये व्यक्तियों के रूप में, पर्सनैलिटीज के रूप में, है ना। हम किसी मजार पे जाते हैं, किसी दरगाह पे जाते हैं ना, ये सारी चीजें हमने अपने आसपास देखी हैं, वहां जाके मनोकामना पूरी होगी, ये सारी चीजें जो है ये इवेंचुअली वहां पर। तो ये पिछले वाले पैराग्राफ से लिंक हो रहा है कि पिछले पैराग्राफ में नॉलेज का डिसेमिनेशन करना था, वो नहीं हुआ, तो फिर ये स्वर्ग, पुण्य कार्य और ये तप वगैरह ये चीजें शुरू हो गई। फिर एक आदमी तप करता है तो उसका फल दूसरे को मिल जाता है, जो उसके पास गया उसकी भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये एक जो है ना, अपने में इस तरह से बातें निकल कर आई, इस चीज को बाबा जी रख रहे हैं। तो आदर्श का सम्मान सुदूर विगत से होते आया है, आज भी होता है। आइडियल्स हैव बीन गेटिंग रिस्पेक्ट सिंस एंशिएंट टाइम्स एंड इट कंटिन्यूज टिल टुडे। इसमें विचारणीय मुद्दा है, आदर्शों का प्रयोजन फल लोकव्यापीकरण ना होना, उपकार कैसे होगा, उपकार विधि का लोकव्यापीकरण मुद्दा होना है कि नहीं होना है, इस पर जन चर्चा की आवश्यकता बनी हुई है। सो पर्पस एंड फ्रूट्स of ideals not reaching the masses, how to be benevolent, है ना। उपकार को benevolence या benevolent लेके चल रहे हैं, how to be benevolent, उपकार कैसे होगा, and whether dissemination of the right method of benevolence is needed or not। तो उपकार विधि का लोकव्यापीकरण मुद्दा होना है कि नहीं होना है, इस पर जन चर्चा की आवश्यकता बनी हुई है। All these are worth pondering and need to be part of conversations.
तो दोबारा से देखते हैं, आदर्शों का प्रयोजन फल लोकव्यापीकरण ना होना, पर्पस एंड फ्रूट्स ऑफ आइडियल्स नॉट रीचिंग द मासेस। उपकार कैसे होगा, उपकार विधि का लोकव्यापीकरण मुद्दा होना है कि नहीं होना है, how to be benevolent and whether dissemination of the right method of benevolence is needed or not. All these points are worth pondering and need to be part of conversations. इस पर जन चर्चा की आवश्यकता बनी हुई है ना। ये इसमें विचारणीय मुद्दा है, ये इस पर जन चर्चा की आवश्यकता बनी हुई है, इसको जो है इकट्ठा कर दिया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक चीज का ध्यान ये भी रहे, ये ना ये एक काफी बोलचाल की भाषा में बाबा जी ने इस पूरी चीज को लिखा है। बिल्कुल मे बी ग्रामेटिकली भी कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, सेंस इंग्लिश ट्रांसलेशन में कहीं पे डाइल्यूट तो नहीं हो रहा या डेविएट तो नहीं हो रहा, इस चीज को हम देखें। तो तपस्वी लोग वो हैं जिन्होंने अपने में काफी मेहनत किया है, ओके उस मेहनत को किया, एंड देन द बिलीफ व्हिच हैज स्प्रेड इज दैट व्हेन वी are in proximity of such people, when we actually have a look at them, जिसको हम बोलते हैं दर्शन कर लिए, हमने इनकी सेवा कर ली, तो हमको भी उनके तप का फल मिल गया, हमारी भी मनोकामना पूरी होगी, ऐसा जो है वो अपने में चल रहा है। इन लोगों को हमने आदर्श माना, ये ऐसे लोगों की भी संख्या बढ़ रही है, ऐसे लोगों की भी संख्या बढ़ रही है, और जो है वो इनका सम्मान करने वालों की भी संख्या बढ़ रही है। सिलसिला अभी तक जोर शोर से चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर आदर्शपूर्ण व्यक्तित्व अपने आप में सामान्य लोगों के लिए कठिन सा लगने लगा। तो ये लगा कि जो कर रहा है उसको हमने श्रेष्ठ मान लिया, उसकी सेवा कर रहा। लेकिन फिर कुछ उपकार नाम की चीज होती है, वो उपकार क्या होगा, कैसे होगा, उसकी कोई विधि होगी, सब लोगों के लिए वो एक ही होगी या अलग अलग होगी, इस पर जन चर्चा की आवश्यकता बनी। क्योंकि इवेंचुअली ज्ञान से भी होना क्या था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ नॉलेज, यूनिवर्सल वेलबीइंग वाज द पर्पस ऑफ नॉलेज। वो यूनिवर्सल वेलबीइंग तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो वहां पर कैसे पहुंचेंगे, वो यूनिवर्सल सिस्टम कहां से आएगा, वो उसके बारे में बात करनी है कि नहीं करनी है, whether dissemination of the right method of benevolence is needed or not. All these points are worth pondering and need to be part of conversations. बताइए कैसा लग रहा है, कुछ रिवाइज करना है, ठीक करना है तो। No comments. Just another, you can consider it or look into the word. Another possible word for dap can be ascetism. I will just write it in the chat, and it basically just refers to all the self-restraint and spiritual practices. So ASCETICISM. Yes. for your consideration, yeah. Sorry. Yeah. Very good, Spencer. That is exactly what I was also looking at. Refraining from indulgence. Practicing strict self-denial as a matter of personal and especially spiritual discipline. Yes. So that ism is the thought process, and the person who does it, who follows this, he or she is called ascetic. Yeah. Is it, or what is the noun? Yeah, the noun is also ascetic. It is the or the noun can be. Yeah, I noun wrote is it says ascetic is the noun. I have Yeah. highlighted it. I wrote it in the chat. You can also say ascetism. Yes, ism is not the person. When as soon as we use the word ism, it becomes a thought process.
That's what my understanding about them. Spiritualism, materialism. Okay, so as soon as we say ism, it becomes different. No, Spencer, what do you think? Yes, it is. It does become different. I'm just not sure in this context. I'm just thinking about the very first sentence of the paragraph. That's where I was looking. Yeah. Okay. So तप में जो कुछ स्वीकृतियां. Okay. Okay. There, yes, there it is. It is a process actually. There it is a process. So as it is a difficult word for me. It's a tough one. Yeah. SCETI. EICISM. Is it correct? Asceticism. Yeah. It will get quite some time for me to get used to it, but yes, ascetics. The word looks familiar, and I think it is a good choice. I'll think more about it. For the time being, we'll just go with this. So here also we can say good, very good. Ascetics is a word. I have read it at some places, so very good. So तप में जो कुछ स्वीकृतियां हैं, regarding asceticism. Okay. Good. Anything else? Okay, so good. Let us see how long is the next paragraph. So we have 5 minutes. Maybe we cannot complete the discussion about this, but at least we can read it. कौन पढ़ेंगे इसको? Someone please. Looking for some volunteer जो इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ दे एक बार. If no new volunteers are there, those who have already read, they can also. कोई और नहीं पढ़ रहा है तो मैं ही पढ़ देती हूँ. हाँ जी वंदना दीदी, प्लीज, थैंक यू. मानव सुदूर विगत से ही ज्ञान की बातें व सूचनाएं सुनकर ज्ञान संपन्न होने की इच्छा करता है. विज्ञान की सूचना सुनकर विज्ञान संपन्न होने की इच्छा हर मानव में पाई जाती है. विवेक संपन्न होने की इच्छा भी हर मानव के मन में स्थान बनाकर रह गई. इसमें आश्वासन देने वाली विधि से विज्ञान सर्वाधिक यांत्रिकता के अर्थ में जितना भी लोक सम्मत हुआ है, उसमें सर्वाधिक आस्था निर्मित हुई. इसके बावजूद जब यंत्र बनने की बात आई, वह थोड़े लोग के हाथ में सिमट गई. यंत्र सबको मिल सकता है, यंत्र सब बना नहीं सकते. इस कक्षा में पहुंच गए. इसमें उल्लेखनीय मुद्दा यही है कि हर नर नारी को रोजमर्रा की यंत्र निर्माण विधि में पारंगत होना या न होना है. यह मुद्दे पर लोक चर्चा की आवश्यकता है. Upon hearing the discussion about knowledge since ancient times, humans have had the desire to be accomplished with knowledge.
When information about science reaches them, all humans want to understand science too. Desire to become wise has also been always there in all humans. Science became more popular with its focus on technology, then the method of assurance, ideals, and thus more people developed faith in science. However, the manufacturing of machines and technology remained under the control of a handful of people. We reached a place where everyone can use machines, but not all can manufacture them. The main point here is whether all humans, male, females, need to be expert in the manufacturing of machines or of daily use or not. Conversations are essential on this point. Badhiya Didi, thank you. Thank you. So this we will do in the next meeting. And for all of you, when we are talking about next meeting, next Sunday, I will be in a shivir. So most likely 99%, we will have to skip the next Sunday's meeting. That is 27th August, we will be unable to meet. So then the following Sunday, which will be in the first week of September, we will see whether we can sort of, do an extra session on Saturday also. So maybe, whenever 3rd or 4th September, Saturday, Sunday is there, I'll ask Dev Bhai separately, and maybe, if convenient, we'll have it on both days. Otherwise, we'll just miss this 27th, and then from next Sunday we'll resume. So I'll just say here. जो सर नहीं पढ़ाए सर से पढ़ जाकर बोला है सर पढ़ाएंगे 1 घंटा लेकर तो कोई बता देगा सर। Any closing remarks? Any sharing from anyone? Can you share me the document link also, sir, so that I can read it offline also? हाँ, बिल्कुल आनंद भाई. It was nice to see you in the meeting today, and you are most welcome. I need your Gmail ID. आपके पास में मेरा नंबर है क्या आनंद भाई? हाँ है ना, तो आप मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पे अपना Gmail ID भेज दीजिए, तो उसमें मैं ये डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी दे दिया है, मैं अलग से भी आपको भेज दूंगा। अलग से मेरे को भेज दीजिए, यहाँ से ना मैंने देखा है कॉपी नहीं हो पाता। चलो मैं फिर अलग से। अच्छा, and another thing I have seen is ये galaxyweblinks.com. Do you have a Gmail ID? I realize ये इसमें कर देंगे तो जीमेल में आ जाएगा, ये जीमेल का ही आईडी है। ठीक है, गूगल का ठीक है, मतलब आप मेरे को भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉपी नहीं कर पाता। मैं पर्सनल में भेज दूंगा। ग्रेट। एनीथिंग एल्स? किसी और को भी, anyone who needs this document link, please send me your Gmail ID and I'll share it to you for you also. बढ़िया है. If no comments are there, we'll close this meeting today and see you after a gap of 1 week in the first week of September. Thank you. Namaskar. Namaste. Thank you. Yeah. Namaste. नमस्ते भैया जी सभी को। Yes, Spencer, how are you? So, yes, how are you?
Oh. You hear me now? जी भैया जी Yes, कुछ I बोल रहे can हैं? hear you. Are you able to hear me? Okay, I'll try again. गुड़िया मौसी भी गई थी रे सोना सोना गुड़िया मौसी गई थी हाँ हमारा टीम है मशीन है तो काट बराबर काम करना सब काम करके वो बस अरे तुमको नहीं कर अरे अभी की बात नहीं बता रहा अच्छा 9:30 बज गया ना